Hi guys, welcome to my channel. Thank you for watching my previous videos and thank you for watching this video. And those who are new to this channel, hi, it's Jasleen Kaur and you're most welcome. So how are you guys? What are you doing nowadays? And as you have read by the title, that today's video is gonna be a haul video. And you also know that this video is going to be a H&M haul video. ये कुछ ज़्यादा बड़ा haul नहीं रहेगा, मतलब I think there will be 8 to 9 items in total. तो उसी का ही बस haul होगा, जल्दी जल्दी होगा. It will not be a long video. And if you want to see a Zara haul video, वो already मेरे channel पे है. तो प्लीज गो वॉच दैट हॉल वीडियो राइट नाउ. उसके बाद आके इस हॉल को देखो या फिर ये पहले देख लो फिर वो देख लेना, whatever suits you, but see both the haul videos. And soon Zara haul part 2 will be coming within I think 1 or 2 weeks maybe. Yes, so pehle we will move forward to the H&M haul and then I'll post the Zara haul part 2. So without any further ado, let's get into the video. So first item guys is of course the blazer which I am wearing. ब्लू कलर का ब्लेजर है, मतलब चौक ब्लू. अगर जिन्होंने बचपन में चौक से खेले होंगे, डॉम्स चौक के साथ बिल्कुल सेम कलर आता है. सो आई थिंक चौक ब्लू विल बी अ बेटर नेम फॉर दिस ब्लू. सो यस, इट्स अ चौक ब्लू कलर ब्लेजर. It's very pretty, it's looks so nice, so adorable, so bomb. So beneath this I am wearing this crop top and this is from Zara. But उसके ऊपर मुझे ना ये ब्लेजर मतलब स्टाइल करने में अच्छा लगा तो I wore it. So first item from H&M haul is this blazer. Screenshot ले लो यार. अच्छा चलो. So second item is this neck piece which I am wearing. This is also from H&M and yeah, it has green little circle type. इसको हम beads भी नहीं कह सकते क्योंकि ये beads की तरह बिल्कुल नहीं है. A flat circle. ये से green में है. It was just a single layer necklace. And third item of my Zara haul is these earrings which I am wearing. These hoops, these both are from Zara and these look so stunning, so stunning. It looks pretty with each and every outfit. These look now very pretty. कुछ बॉस वाइब्स, क्लासी वाइब्स, वो ऐसे ये वाले हूप्स वैसे लुक देते हैं. सो 3 आइटम्स तो मैंने आपको अभी ही काउंट करा दिए विच आई एम ऑलरेडी वेयरिंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ. सो लेट्स गेट ऑन टू आवर फोर्थ आइटम एंड दैट इज दिस क्रॉप टॉप विद स्ट्रैप्स ऑन इट. मतलब ऐसे नॉट वाली स्ट्रैप है, आप इसकी कुछ भी जैसे मर्जी नॉट कर लो. या इट वॉज वेरी क्यूट. इसका कलर कितना अच्छा है एंड इट इज अ स्मोक टॉप. ये देखो, मतलब जितना स्ट्रेच कर दो उतना इजीली स्ट्रेच हो जाएगा. तो इसमें आई प्रेफर गो फॉर 1 or 2 साइज डाउन ओनली. या सो फोर्थ आइटम इज दिस. Moving on to our next item and that is this short, animal print short. इतनी की है ये बस. हाँ, it is an elastic short. I like this so much. इसके साथ ना मैंने एक ऊपर टॉप मैच करके लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. तो ये ना लिनन फैब्रिक में है. सो आई लाइक इट वेरी मच. अब जैसे कि यू नो दैट व्हेन समर्स आर कमिंग, सो यू नाउ अब तो ऐसे क्लोथ चाहिए होते विच आर एयर ब्रीजी, जिसके अंदर मतलब ज्यादा गर्मी ना लगे, विच डू नॉट हग्स योर बॉडी. सो एंड इन समर्स आई यूजुअली प्रेफर लिनन क्लोथ्स ओनली बिकॉज वो एक तो दिखने में बहुत रॉयल क्लासी टाइप लुक देते हैं and with that they don't stuck on your body. You know what I'm trying to say. पूरी hug नहीं करते आपकी body को. They give a very loose fitting ताकि air pass होती रहे. So yeah, this is in the linen short. So I like this so much. Moving on to our next purchase. This is also a white color short and again this is a linen short. Yeah, ये ऐसी white color की short है. It has pocket on both these sides. It has this tying thing over here
and yes, it also looks very pretty. Summers के लिए these shorts are the best purchase. मतलब I swear best purchase. Wear it with anything, it will look classy, it will look fab, it will look bomb at the same time. It will not dull your look, it will always and always enhance your look. So yeah, these shorts are a must have for your summer wardrobe, summer essentials, summer basic, or whatever you need to call it. But yeah, do buy these shorts. So next I have this top again in linen, this white color crop top, एंड इसकी भी साइड्स में ऐसे पॉकेट्स हैं एंड ना इसके यहाँ नीचे नॉट थिंग है, मतलब नॉट नहीं बनी बट नॉट नहीं है, बट इट गिव नॉट नहीं है बट इट गिव्स अ लुक लाइक अ नॉट ओनली. ये देखो, आई डोंट नो, हाँ इट्स विजिबल ना. या इट हैज 2 पॉकेट्स ऑन ईच साइड एंड बिलो इट हैज अ नॉट थिंग. एंड इसकी स्लीव कुछ ऐसी है. दिस इज ऑल्सो इन लिनन. सो या, अ मस्ट हैव फॉर योर वॉर्डरोब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आई हैव, हाँ मैंने आपको जो भी एनिमल प्रिंट शॉर्ट दिखाई थी ना, उसके साथ आई मैच्ड दिस क्रॉप टॉप. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 नाइस. दिस इज इन द स्किन कलर. ये ऐसा क्या है, अ डीप नेक विद लिटिल स्लीव. It looks very pretty. अगर हम इसको पूरा सेट बनाएं, wait a second, I'll show you this short with this top. Looking pretty. So now a V-neck top. इसका नेक ऐसे V है and it has strap. I don't know if इसको मैं क्रॉप टॉप बोलूँ या ना बोलूँ, बिकॉज इसकी लेंथ मतलब इनफ है. क्रॉप टॉप बोलने की जरूरत नहीं है. बट येस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस परचेज. वियर इट अंडर एनीथिंग और वियर इट लाइक ओनली दिस एंड हाई वेस्टेड जीन एंड यू विल लुक दिस फैब, रॉयल, क्लासी, शीक, एलिगेंट, कुछ भी बोल लो. देर आर सो मेनी टर्म्स एंड या वो सब लगती भी हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है. नेक्स्ट अप आई हैव दिस क्रॉप टॉप. इसके साथ ना गाइस एक ना स्कर्ट भी थी, बिल्कुल ऐसे सेम पैटर्न में सेम थी, बट यार वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं क्यों. एंड फिर मैंने कहा चलो अभी के लिए टॉप ही सही. ये भी पूरा स्मोक टॉप है, मतलब स्ट्रेची टॉप है एंड इट हैज स्ट्रैप्स ऑन इट. और उसके बाद सेंटर में इफ यू कैन सी ऐसे ना zigzag thing है. It is a white embroidered, I don't know what is this thing called, जिससे the embroidery has been done, but yeah इतना ही पता लग रहा that it is white embroidered, cream color embroidered crop top. So next, moving on to our I think last purchase. So this is a crop top, a brown, actually not crop top, इसको vest बोलते हैं. So yeah, this is a brown color vest. This I got from H&M. ये भी बहुत सुंदर लगती है. High waisted jean, और even you can pair it up with a skirt and blazer on top of it, और कैसे भी स्टाइल कर लो यार आप सब लोग. I hope you all are very good stylist or anything. मतलब इफ स्टाइलिश नहीं तो एटलीस्ट यू कैन स्टाइल योर सेल्फ इन मेनी मच बेटर वेज, जो कि मैं प्रेफर करूँगी आप उससे अच्छे भी स्टाइल हो सकते हो. सो गाइज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट डिड यू लाइक एनीथिंग और नॉट. मेरी चॉइस कैसी है, अच्छी है या नहीं, बेकार है, और जो भी है. एंड इफ इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये भी बता देना कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा घटिया लगा. सो मुझे पता लग जाएगा. सो this was the end of the video. I hope you guys like this video and I'll see you in the next video. Bye. Thank you for watching. And guys, please wait for 1 second. If you guys like this video, then please do like, comment, share to this video, and also do subscribe to my channel. Guys, if you want to see such more content, yeah, that's it. Bye.